Good evening, guys. I hope you are doing good. I am also good, and we are going to start with our advanced accounting session. And before starting any session, first thing that you have to recall all accounting standards. चलो आज जल्दी से comment section में लिख दो how many accounting standards you remember till today. Okay, so this is our third session, and in first session we have seen introduction to accounting standard, and second session we have started with the framework of accounting. Okay, so now we are going to start with first accounting standard names. तो जल्दी से accounting standard के नाम याद करते हैं. चलो फटाफट सर के साथ याद करो. Number 1 is disclosure of accounting policy. Number 2, valuation of inventory. Number 3, cash flow statement. 4, contingencies and events occurring after balance sheet date. 5, net profit or loss or for the period prior paid items. 6, removed. 7, construction contract. 8, removed. 9, revenue recognition. 10, property, plant and equipment. 11, effects of changes in foreign exchange rate. 12, government grant, accounting for government grant. 13, accounting for investment. 14, accounting for amalgamation. 15, employee benefits. 16, borrowing cost. 17, segment reporting. 18, related party disclosures. 19, accounting for leases. 20, earning per share. 21, consolidated financial statements. 22, accounting for taxes on income. 23 is investment in associates for consolidated financial statements. Then 24, discontinuing operation. 25, interim financial reporting. 26, intangible assets. 27 is investment in joint venture. And then 28 is impairment of asset. 29, contingent provisions, contingent liabilities and contingent assets. Okay, चलो 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 जल्दी ज्वाइन हो जाओ फटाफट. Yes, I know many students, beta. No, now there is no articleship. So every one of you, either direct entry or indirect or foundation based students, all of you have to attend these sessions regularly. कुछ भी होने दो, एडवांस अकाउंट्स का सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है. लाइव सेशंस में रोज आना है. ओके, सो टुमारो बिकॉज इन अ वीक वी आर गोइंग टू मीट फॉर 4 days. तो वी स्टार्टेड लेट बट बेटा इज ओनली फॉर योर बेनिफिट. व्हाई? बिकॉज एवरी वन ऑफ यू मस्ट गेट स्टडी मटेरियल. व्हाट आईसीआई वांट्स फ्रॉम यू कि आपके पास स्टडी मटेरियल होगा तो आप पढ़ाई कर पाओगे. दैट्स व्हाई हम लोग थोड़ा सा लेट स्टार्ट करते हैं. देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस. ओके, और एक बार स्टार्ट किया तो यू ऑल्सो नो इट कि क्या होता है. सर मेरी हेल्थ अच्छी है क्या? बहुत अच्छी है, नो डाउट. बट बेटा देर इज लॉट रेनिंग इन पुणे, सो आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और आज मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जानबूझ के स्लोली बात की है. वाई स्लोली? because reason is very simple. Now you should recall all these accounting standards. So my request to all of you, beta, I have never, yes, increase my speed. क्यों नहीं इंक्रीज करूंगा? while you are in the learning phase. Okay, you are in the learning phase. चलो, so first tell me what was the homework, बेटा. जल्दी से बताओ होमवर्क क्या क्या था एंड व्हाई देयर इज लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. मुझे बिल्कुल भी अटेंडेंस कम नहीं चाहिए. अटेंडेंस आई वांट रेगुलर. ओनली टू थिंग्स दैट आई वांट फ्रॉम यू. वन इज attendance and second one is homework and your 100 pages book. Only 2 points. Okay, 100 pages book and your homework. Chalo, say good evening in the comment section. Let it be very interactive session. Yes, तो आज जल्दी से सभी लोग इंटरेक्टिव सेशन रखिए बेटा. यस, होमवर्क क्या था? चलो से गुड इवनिंग. तरुण बोल रहा है यस. हैदराबाद में भी बहुत बारिश है. Yes, Rehan. In old course, if you have any exemption, you can claim it in the new course. Okay. Nazila is saying, sir, I manifested to meet you in the inter and I did it. Congratulations, beta. Nazila ji, congratulations. Okay. चलो 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 चलो. टीवाई के 10 का सम था. नो रेन इन तमिलनाडु एंड केरला. ओके सर, गुड. लेट्स स्टार्ट. हरियाणा में बहुत गर्मी है. ओके बेटा. व्हाट अबाउट वेस्ट बंगाल?
थ्योरी बाय स्टूडेंट हमें डालना रह गया है। वन थिंग, एक ही मिनट बेटा, एक सिप में बिफोर स्टार्टिंग टुडे सेशन, यस हमारे एक स्टूडेंट का नोटबुक भी बता दूंगा मैं आपको, आज नहीं थोड़ी देर में मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यस, नंबर 10, वी आर गोइंग टू फॉलो दिस बैलेंस शीट ऑफ अनुराग ट्रेडिंग कंपनी। यस, टिक टिकी जी का टेक्निक लगा के मैं सॉल्व करूंगा टुडे। In first half, I'm going to start with this chapter, remaining part of this chapter, and in second half, beta, we are going to see applicability of accounting standards. So, yes, index applicability, you already aware that index ka roadmap, how to, yes, any one of you recall beta index ka roadmap? Chalo jaldi se. And Saturday, normally last 10 minutes, we will keep for revision. Okay, so Saturday will be our revision session and remaining days बेटा our regular session. ठीक है, सो हमारा रेगुलर सेशन हम लोग रखेंगे एंड सैटरडे को हम लोग रिवीजन सेशन। अरे वाह, मेरे सब स्टूडेंट्स आ गए हैं। सो रेगुलर नंबर आई गॉट इट। ओके, सो ऐप पे देर आर मोर देन 500 स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग एंड ऑन यूट्यूब यस 250 प्लस स्टूडेंट्स। चलो चलो चलो, एवरी वन ऑफ यू बेटा, प्लीज प्लीज डोंट मिस दिस सेशंस। ओके, चलो जल्दी से। एंड अभी कोई भी शाम को क्या काम है भाई, मैंने इवनिंग में आई हैव डेलिबरेटली बेटा टेकन माय बैच इन द इवनिंग बिकॉज एवरी वन ऑफ यू बेटा विल गेट रिलैक्स इन द इवनिंग एंड विल अटेंड माय सेशन। ओके, तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी सेशन को मिस मत करियो। और सेकंड वन, पीओएस ऐप में से मेरे साथ इंटरेक्ट करो। सपोज आपको इंटरेक्ट नहीं करना है तो फिर यूट्यूब पे जाओ। ओके, चलो, सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट बेटा बैलेंस शीट। हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑन ऐप? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐप पे आते हैं। सर स्टिल नॉट रिसीव्ड द मटेरियल, रिसेंटली आई कन्वर्टेड एंड आई एम टू रिसीव। ओके रामचंद्र जी, यस आपका मटेरियल आ जाएगा, डोंट वरी। यस बेटा जगत जी, आई कैन सी योर मैसेज। यस, बाय हार्ट पॉइंट्स आई विल टेल यू, डोंट वरी बेटा, बाय हार्ट पॉइंट्स आई विल टेल यू। रोड मैप में कितना करोड़ था बेटा? Lata ji is asking, sir, if we are not attended previous lectures, can I attend first lecture? Yes, but no problem. You can attend. Yes. What was the chalo 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 voluntary basis 2015-16 and roadmap was कितना करोड़ था रे? टर्नओवर। हाँ जी, सबसे तेज आंसर दिया अमित कुमार। वॉलंटरी फेज 2015 एंड कंपल्सरी इन 2016 फॉर मोर देन 500 करोड़। अरे एक नंबर बेटा, एक नंबर। अमित कुमार फ्रॉम सीआरओ का बच्चा है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, बैलेंस शीट ऑफ अनुराग ट्रेडिंग कंपनी। सी बेटा, फर्स्ट थिंग आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर, your life is going to change in the accounting standard. Every session I will repeat this point. Okay, before starting any session, see, though you are feeling that these accounting standards are very boring, sir, but beta, we do not have any other option. And I have tried my best to make every accounting standard very clear. Okay, so it's request to all of you, don't have any negativity because after certain days, एक ट्रेन हम लोग छोड़ने वाले हैं। यू आर गोइंग टू मिस योर ट्रेन। और अब भी बैठे नहीं, इफ यू डोंट कैच योर ट्रेन नाउ बेटा, you won't get success. And see, any faculty will try to make this accounting standard very interesting, but believe me, I have given my 100% from last 10 to 11 years for making this accounting standard very simple. You can see my notes, मैंने कितना simplified किया हुआ है, and we are very, we are people where you can keep trust because study material and all these board of studies, normally, yes, we are the people who prepare this study material, at least who give assistance in preparation of this study material. So ICAI lectures are always best lectures. Many students
think that these lectures are in English, so why we have to attend this lecture apart from the South India, beta, South Indian students. But make sure, beta, you have to give you a paper in English, so at least basic English you can write it in the exam. So every faculty will try to make it English language. I am also trying my best to take lectures in English and take revisions in Hindi. तो revisions में हिंदी में लेता हूं, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आप 100% आपका दीजिए, और ये जो ट्रेन है ना उसको मिस मत होने देना बेटा। मोटिवेटेड रहो, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव कि मैं पास होने वाला हूं और मुझे कुछ करके दिखाना है, ये होगा तो ही सीए हो पाएगा। ये डेली बेसिस में मैं आपको बोलता रहूंगा, यू टू डू बहुत सारे रिविजन्स, बहुत रिविजन्स, यस, मोर एंड मोर रिविजन्स विल मेक यू परफेक्ट। ओके, चलो चलिए बेटा, अभी बैलेंस शीट्स ऑफ अनुराग लिमिटेड, कैपिटल 50,000। चलो आज टाइम लगा के सॉल्व करेंगे। टिकटिकी जी प्रकट हो जाइए। टिकटिकी जी आ गई है हमारी, यस, टिकटिकी जी, टिकटिकी जी, टिकटिकी जी, लेट्स स्टार्ट। कैपिटल अकाउंट 50,000, हाउ टू प्रिपेयर दिस प्रॉब्लम बेटा? फर्स्ट राइट डाउन ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, for the period ended 31st March 2001. Okay. Particulars rupees. Particulars rupees. And after 7-8 lines, balance sheet 2002. Sorry, this is 2002. Balance sheet as on 31st March 2002. ड्रॉ कीजिए बेटा। एग्जाम में भी सेम टेक्निक यू हैव टू फॉलो। So Sanket sir will tell you not only concepts but will tell you how to recall these concepts. Okay. So write down two opening stock. Write down on rough pages. Then you can, do it fair in your 400 pages book. Two purchases. Basic points we can write here. Buy sales. Buy closing stock. In balance sheet is similar balance sheet beta. Capital account. P&L account. After 3 lines, 10% loan and trade payable. Then you have PPE, property, plant and equipment. Arey yaar, I forgot to take two columns. Sir, if same situation happens in exam, what to do? Don't get panic. Okay. Don't get panic. It's okay. You just scratch this and you write it again. Okay. Your 2 minutes, 50 seconds gone, but better don't get panic. It may happen. Okay. चलो. So हम लोग वापस बनाएंगे. Yes. Same situations may happen in exam. So this is how you have to tackle the situation in exam. Trading and P&L account for the period 31st March 2002. Particulars, case 1, case 2, particulars. Actually, you should have full focus. संकेत सर का फोकस हिल गया लगता है। ओके,
चलो कोई बात नहीं, होती रहती है ऐसी चीजें. यस. ड्रॉ फॉर बैलेंस शीट ऑल्सो. Okay, write down to opening stock, to purchases, by sales, by closing stock. Here you can write balance sheet. Don't get panic, beta. 31st March 2002. Liabilities rupees. ठीक है. Assets, case 1 and case 2. You have to be cool like Dhoni, beta. Don't get panic in any situation. Capital accounts, P&L account, sorry, 10% loan, trade payable, property, plant and equipment, inventory, the 400 and 100 pages book, topic wise, check talk. 9. Taman, handwriting, handwritten notes, datas, topic wise, and deferred expenditure. Just want to show. Capital accounts. चलो शुरू करते हैं. Life of the property 5 years with even use. The net realizable value of the property 64,000. So depreciation we will keep pending 64,000 and already kitna amount था 69. So 69 minus 5. 5,000 will be the depreciation and here 65 years. So 69,000 minus 69,000 divided by 5. So 69,000 divided by 5 is 13,800. Okay, minus 69,000. So you are getting 55,200. Next, first point over. Sales and purchase 4.5 and 5. Mail kar. 5 lakhs and 5 lakhs. The cost and NRV, cost and NRV beta 34,000 and 38,000. Both 34,000 and 38,000. So 34,000 and 38,000. Then you have general expenses. Next is general expenses. So how to solve this problem? You understood, beta? 16 by 100, 16 by 100. Closing stock and opening stock. Opening stock of the last year is 36,000. So that will be the opening stock. I forgot to write this. 36,000. Deferred expenditure. Normally amortize over 4 years from 2000 2001. From 2000 2001. See, beta, I am facing a lot of problems of electricity. I don't know
When current will come, beta? Huh. So it's 15,000 and 5,000 per annum means I left with 3 years. So 15,000 में से deferred expenditure, I will take 15 minus 5. Here 10,000 and here it will be 0. So deferred expenditure, yes, 5,000 every year and all 15,000 will be transferred to case 2. Out of trade receivable 10,000 and collection of 4,000 depends on successful redesign. Okay, so debtors, $10,000 minus 10,000 and 10,000 minus 4,000 is in second case. 6,000 already we have done this adjustment to RDD 0 and 4,000. Closing trade payable 10,000 which is likely to be settled at 95%. So 10,000 into 95%, 9,500 by discount on creditors 0 and 500. The prepayment liability to penalty 0 and 2,000. 43,000 45,000 and to depreciation it's 13,800 and 5,000. Okay. So now I can calculate net profit. Now you can check your answer. Only P&L is asked. To net profit. Okay, sorry. I have given you full answer. Star mark. Full answer I have given you. Yes, beta. You can check the answer now. Yes, what is the net profit? See the answer. 12,700. Okay, I have given you both answers, beta. Both. मैंने तो आपको पूरा आंसर दे दिया. Yes. And capital account 50. Assuming only non-going concern means 5 marks का question नहीं है. I have given you 8 marks का question. So only that part is 5 marks. Only going concern. Bus. And P&L is 22,000
and balancing figure is bank balance. Balancing figure is bank balance. Remember, 50 plus 34.7 plus 43 plus 10. So 137,700. And nothing is given, so bank balance is a balancing figure. Remember, 28,500. So you understood how to solve this problem if bank balance is not given in the question. See, your answer is same, 28,500. Bank balance is not going to change. So you are on the correct track. Both answers will give you the same answer, both cases. See, 14 minute 38 second minus 2.5 minute. So 12 minutes का question था. Yes, you can take a screenshot if you want. Yes, those who cannot finish it with my speed, you can take a screenshot. Yes, beta, exam speed आज आपको मैंने समझाया. And don't get panic if you are getting the wrong answer. Balance sheet is not going to tally because bank is a balancing figure. Bank balance is not given, so it will be the balancing figure. And your answer is correct because both will give the same answer. चलो, now your queries, फटाफट. चलो, हिंदी में और इंग्लिश में you can write your queries. Only 2 languages are allowed. Maximum Marathi you can write query. Yes. Discount on creditors 500 कैसे आया बेटा? Yes, very good question. देखो, कुछ भी डाउट्स होने दो, silly doubts. हाँ जी बेटा. Creditors जो है, creditors. What is given in the question? Closing trade payable 10,000, settled at 95%. Settled at 95, which is likely to be settled. Likely to be settled मतलब जो हम लोग पे करेंगे 9,500. 95% is 9,500. तो 500 रुपया डिस्काउंट होगा. समझा बेटा? 500 रुपया डिस्काउंट. हाँ. सेकंड क्वेश्चन. और क्या डाउट्स है? ठीक है सर, कैन यू एक्सप्लेन डेफर्ड एक्सपेंडिचर अगेन? आई एम कंफ्यूज विद द डेट. नो डाउट, नो प्रॉब्लम बेटा. यस, चलो अभी देखो क्या हुआ था. यू इनकर्ड डेफर्ड एक्सपेंडिचर 5,000 पर एनम स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 2001. मतलब 2001 में यू इनकर्ड 20,000 डेफर्ड एक्सपेंडिचर. आउट ऑफ दैट you have written off 5,000. So you left with 15,000. अभी 1-2 में क्या होगा? Now you are in 1-2. अभी इसीलिए तो देखो 15,000 हमारा आया. 15,000 ये P&L में जाएगा, ये बैलेंस शीट, एंड दिस इज इनकर्ड. अभी ओपनिंग बैलेंस 15, 5 एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में 10. वी आर इन दिस ईयर, वी आर इन ईयर 2. तो ईयर 2 में तो देखो डेफर्ड एक्सपेंडिचर हमारा कितना आया? 10,000. वी आर इन ईयर 2, 1-2 एंड 0 विल बी ट्रांसफर्ड. तो इधर हमने 5 लिया, इधर 15 लिया. 5 in the P&L and 15 in 0. Therefore 15 का 15. So you incurred 20,000. How much you incurred? 20,000. ठीक है? And out of that 5,000 is transferred to P&L. So remaining 15,000 is P&L नहीं, बैलेंस शीट. सो सी बैलेंस शीट फिगर 15,000 है. एक बार हिंदी में बताता हूं. देखो बेटा, हम लोग 2001-2 की बैलेंस शीट बना रहे. 2001-2 की बैलेंस शीट में 2000-2001 का 20,000 खर्चा हमने इनकर किया था. कितना खर्चा इनकर किया था? 20,000. पर उसमें से अपने 5,000 P&L में ट्रांसफर किया, तो बचा कितना बैलेंस शीट में बेटा? 15,000. लाइट्स कुठंच नाही आहेत का? चेक कर ना फक्त. हाँ, हो रहा है अभी बीच बीच में टेक्निकल. यस, ठीक है. चलो ओके. सो एक बार आंसर चेक कर लो. आई एम गिविंग यू 1 मिनट का ब्रेक, जस्ट चेकिंग लाइट्स कितने बजे आने वाले. यस, ओनली 1 मिनट का ब्रेक. ठीक है, चलो 1 ही मिनट.
चलो लेट्स स्टार्ट। यस बेटा, वन मोर क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। टीवाई के नंबर 9, टीवाई के नंबर 9, ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट। चलो बेटा, कैलकुलेशन 13,800। Where is calculation 13,800 is? Depreciation. Depreciation is very simple. Your asset value, बेटा ये बहुत सिंपल है, 69,000, 69,000 will be divided over 5 years. So your depreciation per annum is 13,800. And that 13,800 we will deduct. लवकर बोल बेटा, 15 to 20 minutes it will take. Already done. बस हो गया अभी। बैंक में अमाउंट कहां से आया भावना? इट्स अ बैलेंसिंग फिगर बेटा। स्टार मार्क लगाया मतलब बैलेंसिंग फिगर। बैंक में 137,700 में से ये फिगर्स माइनस किए तो बचा हुआ फिगर 28,500 है। बैलेंस शीट टैली नहीं होने वाला है ये क्वेश्चन में। आरडीडी, आरडीडी बेटा, डेटर्स आर 10,000 इफ इट्स गुड एंड डेटर्स बिकम्स 4,000 माइनस करेंगे फॉर रीडिजाइन। ये ऑलरेडी हमने एक एडजस्टमेंट देखा था, 4,000 माइनस करना है। डिपेंड्स ऑन द सक्सेसफुल रीडिजाइन एंड रीडिजाइन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, तो वो डेटर बोल दिया भाई तुम्हारा ये अच्छा नहीं है सिस्टम, यदि आप ऐसे सिस्टम लगाओगे तो मैं 4,000 रुपया दूंगा। तो वो डेटर ने अपना पैसा डुबाने वाला है और सिस्टम लगाना पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ गोइंग कंसर्न इज नॉट फॉलोड। नेक्स्ट, और कुछ डाउट्स है? जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो। लोन कॉन्सेप्ट देखो बेटा, लोन कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा लाइट आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आई डू नॉट हैव एनी ऑप्शन। यस, लोन कॉन्सेप्ट। सी 2,000 बैंक इज गिविंग यू पेनल्टी। पेनल्टी मतलब क्या कि इफ यू पे अर्ली 43,000, सो 10% का लोन है, अभी अर्ली पेमेंट किया तो क्या होगा? बैंक विल लूज देयर इंटरेस्ट। ओके, सो बैंक अपना इंटरेस्ट भूल जाएगा तो बैंक आपको पेनल्टी लगाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव गिवन लोन टू यू ऑन 8% पे या 9%, but my expectation you will give me loan interest amount for next 5 years and you told me कि नहीं sir, I don't want to continue with your loan, please take this loan back एक साल में, तो I will charge you penalty. I have reduced my interest rate because you are in the long term agreement, and if you agreement cancels, तो then in that case I will charge you penalty. okay, तो penalty मतलब क्यों चार्ज करते हैं? क्योंकि आपने एग्रीमेंट तोड़ा, एग्रीमेंट तोड़ा तो 2,000 रुपए की पेनल्टी है। प्लीज नहीं बस बेटा, यस प्लीज नाउ अदर स्टूडेंट्स, yes, I cannot give so much time on one question. पंद्रह हजार पूरा का पूरा देखो, जब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ही एप्लीकेबल नहीं होगा, डेफर्ड एक्सपेंडिचर भी नहीं रहेगा, एक्सपेंडिचर भी डेफर नहीं होगा, तो पूरा का पूरा P&L में डाल देंगे। मुस्कान, यस यस बेटा, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करके लिखो, कोई बात नहीं। यस, थैंक गॉड लाइट आ गया, इट्स ओके। चलो लाइट आ चुका है। ओके, नाउ एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। अभी क्लियर है ना मन? ओके, चलो now going to solve 9 number. Opening balance sheet, Mr. A showing aggregate value of assets and liabilities. तो कैसे लिखने को सिखाया मैंने? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस, यस टाइम स्टार्ट कर देंगे। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, या एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल करो। एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। 8 - 3 इज इक्वल टू 5। अर्न 10% डिविडेंड
2000 equity shares of 100 each. 2000 into 100 into 10%. Dividend कितना हुआ? 20,000. 20,000 means 0.2 rupees in lakhs. 0.2 से what is the entry? Cash बढ़ गया. Cash means asset increase and dividend is income. Income increase means capital increase. Income increase means capital increase. So yes. Okay, next. Paid 50,000 for settlement of 70,000. So asset reduced by cash goes out. Asset reduced by 0.5. Liability reduced by 0.7 and capital increased by 0.2 because 20,000 ka profit. We have to pay less. 0.2 is profit. Rent outstanding. Rent means P&L. Rent outstanding means liability and capital decreases. Expenditure. Rent is expenditure increases. Expenditure increase means capital increase and liability, sorry. Capital decrease. Sorry, capital decrease because it's our loss. Loss है तो capital नीचे आएगा. So liability increased by 0.1 and capital decreased by 0.1. A withdrew the business में से 9,000 for personal use. So cash goes out and capital reduce by 0.09. 0.09 ना बेटा ध्यान में रखना. 0.09. चलो लिखो. Asset minus liability so serial number, particulars, liabilities is equal to capital or equity? Equity. Opening balance rupees in lakhs. कौन? Dividend received 8.2 3 5.2 Roman 3 creditors settled 8.2 minus 0.5 7.7 3 minus 0.7 liability 0.7 and 5.2 P minus 0.7 is 2.3. Sorry, 5.4. Yes. Roman 4. Rent payable. Rent payable asset as it is. Liability increased by 2.4. 5.3. Drawings. Asset decreased by 0.09. $5.21. Check. कुछ तो गड़बड़ हुआ है. 7.7 minus 0.09. 7.61. Sorry. इसलिए इक्वेशन चेक करते रहो. Minus 2.4. Yes, now it's correct.
5 marks क्वेश्चन 5 minutes. ओके 5 marks का क्वेश्चन है ये. टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट. 5 marks question 5 minutes. ओके इजी इजी है बेटा ये भी. चलो इसमें कुछ डाउट्स होंगे तो पूछ लो फटाफट. गिविंग यू 1 minute टू आस्क मी डाउट. अभी इसमें तो क्वेश्चन में मत रखो यार. बेटा I cannot solve your all queries because it's not possible. So wherever I think this question is irrelevant, मुझे जहां पे भी लगेगा कि ये क्वेश्चन का कोई यूज नहीं है, I am not going to take that question if I explained it already. I won't spend time on each and every question. हाँ जी. डन इन 3 minutes. वेरी गुड बेटा. चलो और कुछ क्वेश्चंस. बारिश. चलो 9 हो गया 10 भी हो गया. इंडेक्स भी आपको कॉपी करना है. आई विल गिव स्क्रीनशॉट के लिए टाइम एट द एंड बिफोर दिस लास्ट में बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 3. ओके चलो अभी क्या बचा है. हाँ वन मोर कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आई विल डू फर्स्ट. First, we will finish with the practical concepts. Measurement of elements of financial statements. Chalo. Measurement of elements of financial statements. So see, now we are going to start with theory part. बेटा वापस लेक्चर देख लेना. दिस इज होमवर्क है तो समझा समझा के सॉल्व करवाऊंगा. तो बेटा जमाना आपका लेक्चर 8 महीने चलता रहेगा. ओके सो आप भी थोड़ा समझा समझा के पढ़ाई करो. जो भी लिख रहे हो कि समझा समझा के सिखाओ. तो इतना भी एग्जाम स्पीड भी आपको मैच करना है. नहीं तो गाड़ी कभी पकड़ने वाले नहीं हो. थोड़ा घर पे भी पढ़ना पड़ता है. रोज क्लास में आके चलेगा नहीं. 2 hours स्टडी 2 hours क्लास ऐसा होना चाहिए. नाउ सी we are following 4 concepts. Historical cost. When we are recognizing assets and liabilities, we follow only historical cost. But some people, they follow revaluation model. And revaluation model, you have to understand this revaluation model. For that, you will need concept of current cost, realizable value, and present value. I will first explain you illustration and then we will solve theory. Okay. एक illustration आपको explain करता हूं. See, example number 5. Example number 5. Come to example number 5. Page number 2.22. पेज नंबर 2.22 पे आ जाइए इन योर स्टडी मटेरियल. Yes, beta. Qualitative characteristics we will do later. First, we will finish with the practical part, and then I will take a break. Break के बाद बचा हुआ theoretical part. Okay? Okay. Mr. X purchased a machine on 1/1/2001 at rupees 7 lakhs. So this is beta acquisition price. Acquisition price. So acquisition price is always called as historical cost. तो यहां पे लिखो acquisition price is historical cost at price at which you acquired this asset in 2001. The acquisition price over.
historical cost. On 1/1/2006, Mr. X found that is after 5 years. After 5 years, it would cost 25 lakhs to purchase the machine. Current cost. Current cost means if you are going to buy that asset, then it will be today after 5 years. So see, when I bought my Activa in 2010, अभी भी यूज कर रहा हूं, मॉम यूज कर रही है. In 2010, Activa was costing me 60,000 in 2010. So that will be historical cost. If I buy today Activa, I think it's costing me 1,10,000. So it's an inflation. Due to inflation, beta, we are finding that Activa cost me 1,10,000 is called as current cost. Okay. Next. Then if I sell my Activa today, if I am going to sell my Activa, it is called as realizable value. What is called as realizable? Mr. X took a loan. So it's now related to liability. So this part is asset part. And from here to Mr. X का ये जो part है, it's a liability. Took a bank loan of 5 lakhs. So liability की जो historical cost है, so I have taken a loan of 5 lakhs at the rate of 18% per annum till the end of 15th year. Okay. So 15th year तक मुझे loan repay करना है. I am getting a time up to 15th year. So see, as per historical cost, liability is 5 lakhs. Underline. Liability is 5 lakhs. And asset is 7 lakhs. So one information is about asset and one information about liability. So you got the concept. Historical cost and current cost. Current cost means if you acquire it today, and realizable means if you sell it today, it's called as realizable. Current cost is acquisition price. एक बार हिंदी में, बेटा मैंने 7 लाख में एक मशीन परचेस किया 2001 में, तो 2001 को मैं बोलूंगा हिस्टोरिकल कॉस्ट. 2001 को क्या बोलूंगा? हिस्टोरिकल कॉस्ट. अभी वही सेम मशीन यदि मैं आज बाय करता हूं, यदि सेम मशीन मैं आज बाय करता हूं, तो मुझे 25 लाख रुपया देना पड़ेगा. बाय करता हूं तो ये करंट कॉस्ट होती है, और ये बेचता हूं तो रियलाइजेबल वैल्यू. बचा सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू. वेट, बताने वाला. ये हुआ एसेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन. मैंने लोन लिया 5 लाख रुपए का 2001 में, जो 15 साल की मुझे टर्म मिली. मोहलत कितने साल का मिला? 15 साल. तो 15 साल में 18% बैच से ये रीपे करूंगा, तो इसको बोलूंगा हिस्टोरिकल कॉस्ट. हिस्टोरिकल कॉस्ट. समझी गयो बेटा? एकदम इजी छे. हाँ जी सर. यस, वेद प्रकाश जी, if you clear your first group, then your accounts will be exempted. Don't worry, for new course. For new course. But you have to give you have to do articleship of, now if you start your articleship 3 years, but otherwise you have to clear your second group and then you will start with your articleship. Yes. Chalo. Second one. A machine was acquired.
$10,000 on deferred basis. Deferred means divide. I'm not going to pay it immediately. Okay. So what is my cost? $10,000. A machine means asset. Asset kitna? $10,000 into 49 rupees. 4,90,000 is my acquisition price. तो इसको बोलूंगा मैं historical cost. The rate of exchange is 49. तो मैंने 49 से multiply किया. I have multiplied by 49. The payments are to be made in 5 equal installments. I am going to do payment for 5 installments. कितना installments में payment करूंगा? I am going to pay it over 5 installments. Okay. So every year $2,000. $2,000 every year. Every year means per annum. Every year means per annum. The current market value of the similar machine is 5 lakhs. Current market value. So it's a current cost. So by historical cost, I will record it at 490. And my liability is also I'm going to record at 4,90,000. This liability is not the present value. Remember, this is because liability is recorded at undiscounted amount. Now, what is undiscounted? Wait, I will tell you it in the next one. So it's very simple. दोनों भी historical cost है. दोनों भी historical cost है. Easy. Example 5 and example 6. If you have any question, you can ask me. If you have any question, you can ask me. Now, I'm going to take example 7, which is concept of present value. कौन सा concept है? Present value. Yes, Shahid. Now, what is present value and how it is calculated? Let's try to understand. Yes, Anmol, last paragraph, you will understand it now. Undiscounted and discounted, that I will tell you it now. Okay? No, beta. Interest is P&L ka item. Interest is expenditure. So we cannot add it in liability. So don't add your interest in your liability. Okay? Interest ko add mat karna in liability. Okay? Because liability is different, expenditure is different. Interest is expenditure, not loan amount. Principal amount is different and interest is different. Interest is expenditure and loan is liability. Very good. हाँ बेटा, I will give you screenshot for 400 pages. Don't worry. Wait for some time. Carrying amount of machine 40,000. Carrying amount is known as book value. What is called as book value or written down value. Asset आप लोग book value बोलो या written down. Written down why? Cost minus depreciation. Cost less depreciation. Down. Written down. Down means कम करना. Okay. So cost में से depreciation minus किया तो उसको बोलेंगे written down value. The machine is expected to generate 10,000 net cash inflow. 10,000 per annum. Okay. And net realizable value 35,000.
interest rate is 10% per annum. It is called as, in finance language, it is called as discounting factor. What is called as discounting factor? The machine is going to earn this 10,000 for next 5 years. Kitna years? 5 years. See beta. This is my timeline. I will first clarify the example. Year 1, year 2, year 3, in year 4 and year 5. What I am going to earn? 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 in year 4 and year 5, 10,000. It is called as future value. इसको क्या बोलते बेटा? फ्यूचर वैल्यू. 10,000 एक साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद. Every year I will get 10,000. And present value. How to calculate present value? Yes, I will teach you. Present value means discounted value. Why? To get 10,000, understand what is the sentence? To get rupees 10,000 after 1 year at the rate of 10%, how much should I invest? Should I invest is equal to present value. Present value means to get 10,000 after 1 year, how much should I invest today? See, what is the maths ka formula? Future value is equal to present value into 1 plus r raised to n. I know future value is 10,000. Present value I want to calculate. R means rate of interest. R means rate of interest. 0.1 after 1 year. So n is 1. After 2 years, n is 2. So can I write it as present value is equal to 10,000 divided by 1.1 raised to 1? Yes. This is a maths formula. You have to recall this formula. This formula, you already know this formula, foundation based students at foundation level in mathematics, and direct entry students, this is future value is equal to present value into 1 plus r. R for rate of interest and n matlab life. Okay. When you are going to get that 1 rupee. Okay. So this is maths formula. So can I write it as it is 10,000 divided by 1.1 raised to 1? Yes. 10,000 divided by 1.1 raised to 2? Yes. 10,000 divided by 1.1 raised to 3? Yes. 10,000 divided by 1.1 raised to 4? Yes. And 10,000 divided by 1.1 raised to 5. Direct entry students, please have patience. This is mathematics. You have to recall this concept after my session. So what is the value? Take on calci. 10,000 divided by 1.1 is equal to 9091. Again is equal to, so second year, 8264. Again is equal to 7513. Again is equal to 6830. And again is equal to 6209. ये कैल्सी यूज करना है. Citizen calci. Okay. Don't use Casio calci. Use only citizen calci. ठीक है बेटा? हाँ जी. And then press GT function if you have. I do not have GT function, so I will use another shortcut. Okay, so this total 9091 plus 8264 plus 7513 plus 6830 plus 6209 total is called as 37907. See the answer, 37900. So 37907, rounding off difference is there. Okay. Then this is understanding way. Understanding
What is calciway beta? Calciway 1 divided by 1 plus r raised to n is equal to m plus for n years, n times. मतलब क्या? 1 divided by 1.1 is equal to m plus हमारे केस में 5 times. And then memory recall. This is step 1. Then you have step 2, memory recall and clear, MRC. Recall press किया तो 1 time press is recall. 2 time press it will get recall के बाद clear. मतलब मेमोरी में से हट जाएगा. 2 बार दबाया तो बटन. चलो लो कैल्सी पे 1 divided by 1.1 is equal to m plus 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 5 times. Memory recall 3.7907. And whatever the answer, step 3 multiplied by whatever the answer, 7-8 कर सकते हो आप इसको, multiplied by 10,000. $37,908. We are getting the same answer. Shortcut of calci. You can solve it in this way. Shortcut of calci. Step 1, step 2, step 3. Calci way. Calci way. Orped is also good, beta. Please don't use Rohit. Casio calcis. It's my request. Still, if you want to use, because Casio has some own functions. Other calci does not have. Okay. Yes, Anusha. We will solve each and every question of study mat. सिर्फ आपको रोज अटेंड करना है. कैसियो कैल्सी को एक प्रॉब्लम है, कुछ कैसियो कैल्सीज में ये शॉर्टकट्स नहीं होते, उनका फंक्शन अलग चलता है. ओके, so our answer is 37,908. Okay, and if I am going to sell that asset, I will get only 35,000 और बुक वैल्यू इज 40,000. सो हाँ जी, तो वैल्यू इन यूज, सो यू विल रिकॉर्ड योर एसेट, वैल्यू इन यूज एंड नेट सेलिंग प्राइस, whichever is higher. Higher must be your carrying amount. इसको क्या बोलेंगे? This should be your carrying amount. Value in use is present value. And net selling price, impairment में समझाऊंगा. So you should record your asset at selling price or present value, whichever is higher. But you are recording your asset at 40,000. So you should reduce your assets value by rupees 2,100. Presentation कैसे करना है? I will show you. Yes, presentation check करो. Exam presentation. Yes. ILU 1, ILU 2. See, this is the exam presentation. Carrying amount is 40,000 and recoverable amount. अच्छा, sorry, I have written over there present value ना, उसको recoverable amount करो बेटा. इसको recoverable amount बोलो. Okay, so you have to reduce your price.
सॉरी, इसको बोलते हैं रिकवरेबल अमाउंट. क्या बोलते बेटा? नॉट कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट. व्हाट इज कॉल्ड एज recoverable amount, not carrying amount. Write down. Recoverable amount is higher of. And how to present the answer? See the answer. Yes, एक बार पढ़ लेते पूरा. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है. Don't miss it. Okay, because this language is very new for everyone. और आपको ये एग्जाम्पल्स फ्रॉम स्टडी मटेरियल बहुत लोग फास्ट फास्ट में बताएंगे. आई एम गोइंग स्लोली स्लोली. Impairment loss is carrying amount is greater than recoverable amount. Carrying amount is 40,000. Yes, some students are asking me, sir, are you going to take costing? No beta, मैं costing नहीं लूंगा with ICAI head office में. हाँ, but if you want, मैं costing हिंदी में लेता हूँ एट ब्रांचेस पिंपरी चिंचवड़ में. तो आपने ये बताया था, तो जल्दी से ही वो जूम पे बैच चालू होने वाला है ऑनलाइन, तो आप लोग उसको अटेंड कर सकते हो. और आपको एक सिर्फ नंबर दे के रखता हूं मैं, तो आप पिंपरी चिंचवड़ ब्रांच को कभी भी कांटेक्ट करो. आई एम नॉट गिविंग माय पर्सनल नंबर, इट्स अ ब्रांच नंबर. सो दोज हु वांट ब्रांच नंबर, तो यस आई विल प्रोवाइड यू, डोंट वरी. जिनको मेरे से हिंदी में कॉस्टिंग पढ़ना है, ओके, डोंट वरी, जो हिंदी में कंफर्टेबल है. हाँ जी, yes. So impairment loss, carrying amount and recoverable amount. देखो, carrying amount is 40,000, recoverable amount is higher of value in use and net selling price. This is a new concept. Red pen. This is a new concept. Value in use is a present value. Present value 10,000. And calci method I taught you. Okay, logical method 37908. चलो, हो गया क्या? हो गया? यस. विल टेक अ स्मॉल ब्रेक. आई नो कि अभी आपको ब्रेक की जरूरत है, तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल 7 मैंने लिख के दिया है. 5 and 6 आई डोंट थिंक यू नीड. ओके, आफ्टर ब्रेक. अच्छा, ये 9 भी हो गया. आफ्टर ब्रेक आई विल टीच यू one more concept. So now you understood what is the present value. If you have any doubt, you can ask me. आप मुझे, यस, और ब्रेक के बाद मैं खाना खा के आऊंगा. यस, स्क्रीनशॉट्स एट द एंड बेटा. हर सिंह स्क्रीनशॉट एट द एंड. रिकवरेबल अमाउंट मतलब क्या? तो बेटा ध्यान में रखो, रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ. हायर ऑफ, एक बार हिंदी में बताता हूं. कैरिंग अमाउंट मतलब बेटा जो हम लोगों को बैलेंस शीट पे मिलने वाला है. बैलेंस शीट की वैल्यू इज कॉल्ड एज कैरिंग अमाउंट, 40,000. एंड रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल मतलब मैं कितना रिकवर करूंगा. एसेट बेचा तो 35,000, और एसेट नहीं बेचा तो 10,000 हर महीने, हर साल कमाओगे. हर साल कितना कमाओगे? 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. तो उसकी आज की वैल्यू, ये सबकी प्रेजेंट वैल्यू 1.1 डिवाइड बाय 1.1 रेज टू 1 डिवाइड बाय 1.1 रेज टू 2. इसका कैल्सी शॉर्टकट क्या बताया मैंने? कैल्सी शॉर्टकट इधर लिख के देता हूं. कैल्सी शॉर्टकट 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1.1 मतलब 1 रेज टू आर. चलो, कैल्सी शॉर्टकट n टाइम्स 1 डिवाइड बाय 1.1 5 टाइम्स मेमोरी रिकॉल into 10,000. So this is Calci shortcut. Please watch the session once again. If you have any doubts, screenshots at the end. Yes, so we have solved in this session one example of balance sheet. Now it's very clear. So इसमें 2-3 टाइप के प्रॉब्लम्स है. Number 1 is that balance sheet problem. Number 2, asset minus liability is equal to capital. This is the second type of question. This is third type of question. Historical cost. Historical cost मतलब acquisition price. Then
You have, yes, now I will show you the slide also. ये नहीं, हाँ जी. Measurement is a process determining the money value. So determining the money value at which element can be recognized in the balance sheet and in P&L. तो measurement basis कितने हैं? Yes, historical cost, current cost, realizable value and present value. चलो देखो एक बार. Don't take screenshot. याद करो चारों को. Historical, HCRP, HCRP, HCRP. Historical cost में क्या आएगा बेटा? Historical cost, try to understand now theory, at which you acquire that machine. Assets are recorded at amount which is paid or fair value of the asset at the time of acquisition. Now what is fair value? I will explain it in the accounting standard 10. और liabilities are recorded जितना आपका obligation है. Current cost. Current cost means if you are going to acquire that asset today, acquiring asset currently, and liability मतलब obligation currently pay करने गए तो. Okay. Realizable value is for assets, that is if you sell that asset. Realize matlab cash comes in when you are selling that asset. So current cost when you purchase, realizable value when you sell, and historical cost when you purchase in past, and current cost is you purchase today, and realizable value means if you sell today. हिंदी में एक बार, purchase historical cost जब मैंने खरीदा था मेरी एक्टिवा की 10 साल पहले की प्राइस, फिर आज परचेस करने गया तो 1,10,000 और बेचने गया तो 60,000, तो 60,000 होगी रियलाइजेबल वैल्यू, 1,10,000 होगी करंट कॉस्ट, एंड 60,000 50,000 में मैंने लिया था, दैट इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट. एंड प्रेजेंट वैल्यू मींस डिस्काउंट करके जो आएगा, व्हाट अमाउंट कैश इनफ्लोज जनरेटेड एवरी ईयर, 10,000, 10,000, 10,000. And liabilities, what you are paying every year. Normally liabilities will not ask, asset will be asked in the exam. Liability तो allowed ही नहीं है. Assets आप लोग present value और realizable value, ये दोनों के whichever is higher, present value और realizable value, which is higher is called as recoverable amount, और recoverable amount is compared with, yes बेटा, किसके साथ कंपेयर करते? कैरिंग अमाउंट. इफ कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर इट इज कॉल्ड एज इम्पेयरमेंट लॉस, एंड इफ कैरिंग अमाउंट इज लेस, सॉरी, इफ कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर, हाँ, देन इट विल बी इम्पेयरमेंट लॉस. इफ कैरिंग अमाउंट इज लेस, नो इम्पेयरमेंट लॉस. मैं एक बार वापस बताता हूं. देखो बेटा, मेरे बुक में कैरिंग अमाउंट इज 100. ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. कैरिंग अमाउंट इज 100. एंड हाउ टू कैलकुलेट रिकवरेबल अमाउंट? Recoverable amount is higher of present value, और इसको बोलते present value means value in use. And realizable means if you are going to sell, suppose present value is 90 and realizable value is 95, and this difference is called as impairment loss. Impairment loss is 5. Present value 105 और 120, whichever is higher, तो 120, but 100 is less than 120, so no impairment loss. No impairment loss. Remember this example. Why? Because your carrying amount is less. Carrying amount less doesn't matter, but if carrying amount is higher than these two, then impairment loss. क्या बोलते हैं उसको? Impairment loss. Okay? ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना. कैरिंग अमाउंट इज 100, 90, 95. टेक अ ब्रेक. इज ऑलरेडी बेटा है लगा हुआ. बीओएस में भी लिया जाता है बेटा, डोंट वरी. यस, चलो. डिस्काउंटिंग मतलब डिवाइड करने का फैक्टर, इंटरेस्ट रेट. लाइबिलिटीज
ये नॉर्मली हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बताई जाती है, लाइबिलिटीज ये हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बताई जाती है। ओके, चलो ब्रेक ले लीजिए, और ब्रेक के बाद हम लोग मिलेंगे न्यू कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फाइनेंस की कॉन्सेप्ट। ओके, चलो ब्रेक।
Now we are going to start with next concept, which is capital maintenance. Now this is the last concept, practical concept in this chapter. And then we left with some theory part. Okay. So we have completed measurement and last part is capital maintenance. Welcome back once again बेटा. I hope कि आपका डिनर हो चुका है. Yes. So I already told you कि कौन सा कैल्सी यूज करना है. अभी मैं कैपिटल मेंटेनेंस तक कोई भी क्वेरी ले लूंगा. So you please do not ask me any query. I will solve your all queries after capital maintenance. If you have any doubt, you please have some patience. Because today we have to start with chapter number 3 also. In chapter number 3, it is applicability of accounting standards. It's very simple chapter. And next 25 minutes will be capital maintenance. And after that, beta, I'm going to start with the fresh chapter. तो आज का लेसन 8:35 तक आगे का 1 hour का लेक्चर रहने वाला है. Okay. And my lovely students, I know your patience level. It's increasing day by day. Okay. आप लोग बहुत ज्यादा पेशेंस आपके बढ़ रहे हैं. एंड डेली बेसिस पे यू कैन सी your achievement. Okay. See, CA, you cannot get this degree within 1 month or 2 months. But if you work hard for next 8 months, if you leave everything which is actually not needed and you focus only on your study for next 8 months, if you are fully devoted for this course, better you will clear this exam in your first attempt. I won't say it's attempt also because we never think that we will need attempts. If you have good faculty, if you have good conceptual clarity, if you know why you are learning this subject, then beta, nothing is difficult in this CA course. Okay. So try to understand your study material thoroughly. If you can read your study material, it means your concepts are very clear. ये ध्यान में रखो. ठीक है बेटा. चलो सो स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट पार्ट कैपिटल मेंटेनेंस. You will tell कि sir why you give motivations after certain time, but motivations always keep you alive in the class. That is only the reason I will always motivate you. तो motivations बहुत जरूरी है लाइफ में. I also need motivations. जैसे कि मैं सपोज मेरे से कभी कभी होता है कि यार क्या ये कितना टाइम सिखा रहा हूँ, दिन भर क्लास ले रहा हूँ, फिर मुझे ध्यान में आता है कि भाई नहीं, अपने को कुछ अचीव करना है, मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स रैंकर्स होने चाहिए, माय मैक्सिमम स्टूडेंट्स. और ये जब मेरे सामने फीलिंग आता है ना, तो वो वापस से मुझे जिंदा करता है कि वापस कोर्स को एक्टिव करने के लिए. तो मैं भी मोटिवेटेड रहता हूँ. जितने आप लोग बेटा देख, अभी तो आई एम फॉर एवर 18 ही हूँ. ओके ठीक है, जोक्स अपार्ट. नाउ 39-40 मतलब 40 रनिंग है. तो बेटा और कितने साल में सिखाऊंगा? 8 years, 9 years, 10 years maximum. After that, I'm going to leave this. But in this 10 years, ICAI has given me the recognition. So I want maximum. तो मेरा भी कुछ एम है ना कि मेरे मैक्सिमम रैंकर्स होने चाहिए. कि जितने भी इंडिया में रैंकर्स है, कि संकेत सर से अकाउंट्स पढ़ा हुआ है, मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, ये मुझे चाहिए. एंड दैट इज ओनली द थिंग कि मुझे जो आपसे भी चाहिए रहेगा कि आप लोग कितना मैं रैंकर्स को लेके आ सकता हूँ. अभी एक कल परसों किसी रीटा ने मुझे या रीना किसी मैसेज की इधर बोर्ड ऑफ स्टडीज ऐप पे कि सर आई गॉट 93 मार्क्स इन अकाउंट्स. दैट इज ऑल्सो अचीवमेंट फॉर मी ना, कि हाँ भाई मेरे सब्जेक्ट को इसने देखा था एंड शी गॉट 93 मार्क्स. एक टीचर के लिए कितना बढ़िया बात होता है. ओके चलो, capital maintenance. See, beta, there are 3 types of capital maintenance. Now, what is capital maintenance? Should I clear first with example or should I take directly theory? आप ही बताओ. आप ही बताओ. Should I first explain through example or theory?
What do you want, beta? Through example or theory? Acha, सुबह audit में I have seen there are less number of students. Why, beta? You don't want to attend audit subject? I am not scolding you, but all subjects are equally important. With example. Maximum students answered with example. ठीक है, चलो come to example number. Yes. कभी भी पार्थ का एक वीडियो देखना फ्रॉम अहमदाबाद मेरे चैनल पे, यू विल गेट मोटिवेशन. ये बंदा 99 मार्क्स इन कॉस्टिंग, हाउ ही अचीव्ड दैट, कभी तो देख लेना. ये मोटिवेशन के लिए बहुत सही है. ही इज ऑल्सो आईसीआई स्टूडेंट, बट ही मेट मी. हाँ गया. ओके. सी, आईसीआई का प्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, एंड वी विल डू इट इन द सिंपल वे. ओके, विल डू इट इन द सिंपल वे. A trader commenced a business on 1/1/2001 with rupees 12,000. So this is your opening capital. Opening capital. He started a business, 12,000 rupees. He bought 6,000 units of rupees 2 per unit. So 12,000 he invested. He bought purchases 6,000 units and rupees 2. Now, meanwhile, he sold these units at rupees 3 per unit. So tell me, how much he received? 6,000 units into 3, 18,000. Out of 18,000, his drawings is 6,000. So he received 18,000 and he retained balancing figure 12,000 in business. Okay. So he retained 12,000. He withdrawn 6,000 and he retained 12,000. So opening capital and retained amount are same. Opening capital and retained amount are same. So his retained profit, opening capital and whatever retained is same. Okay, that is a retained cash. Cash which is retained. So 12,000. So his profit is 0 which is retained. तो जो भी कमाया वो पूरा लेके गया. Whatever he earned, बेटा, he withdrawn. So retained profit is 0. So now how to present the answer? Answer presentation very simple. This is the presentation of the answer. Opening equity 6,000 into 2. Closing is he sold 6,000 units at 3. So maximum drawing is 6,000 and he withdrawn the amount 6,000. So retained profit. If you learn this format,
तो बेटा it will be very easy for you to solve any question of financial capital maintenance, and this is called as historical cost. This is what is called as historical cost. Okay, so remember this concept. This is historical cost. But I am very happy that every one of you are attending in the live session. You have patience. Many students, they joined my classes, our classes of Board of Studies, and they are attending it on daily basis because I can see the number of students on app also and on YouTube also. And believe me, आपकी बैच फर्स्ट बैच होगी कि अटेंडेंस रोज उतना ही है. मतलब all of you want to pass this course. Very good. And second thing that I want to tell you, yes beta, wait, we will solve that question. Ravneet, we are going to solve that question. बेटा कोई इतना डिटेल में नहीं बताएगा. 100 पेजेस की बुक है ना, वो प्रॉपर मेंटेन करो. ऑलवेज थिंक फॉर द फ्यूचर. आज कॉन्सेप्ट सब याद आएंगे. सी हाउ ब्यूटीफुली शी हैज मेंटेन chapter 1 with date when we started this new course on 21st of August. ये हमारी जूम की बैच है, पिंपरी चिंचवड़ की हिंदी वाली. See how she has written all these things date wise. You can see date wise she has written every day dates. देखो हैंडराइटिंग भी देखो. डेली जितना होता था. This batch is in the morning 5:30, and believe me, more than 90 to 100 admissions are there who are attending live morning at 5:30. See the dedication of students. Okay, ये बहुत जरूरी है, ये dedication. Morning 5:30. Believe me, I am also taking the session in the morning. Chalo. This is only for your motivation. See, students are doing this, then why I can't? I deliberately, beta, I downloaded all her answers, 400 pages, 100 pages, and daily I will show you. देखो बेटा, हिंदी में एक बार बता देता हूं. 6000 यूनिट्स 2 रुपए से लिए थे, 12000 रुपया. क्लोजिंग इक्विटी 6000 यूनिट्स 3 रुपए से, 18,000. तो मेरा मैक्सिमम ड्रॉइंग्स कितना आएगा? मैक्सिमम ड्रॉइंग्स विल बी 6,000. कितना है? मैक्सिमम ड्रॉइंग्स 6,000. और उतना तो मैंने विड्रॉ कर भी लिया. ओके, सो आई कैनॉट रिटेन एनी प्रॉफिट. Second example, example number 9. Yes, now we'll solve one more question. बेटा वो उसका ओरिजिनल राइटिंग है, बढ़िया राइटिंग है ना, मस्त लिखती वो एकदम, हरियाणा की लड़की है. In the previous example 8, suppose that average price indices, now this is something which is very new. Average price indices means what? 1 year before, petrol price was 100. Petrol price was 100, example, for 1 liter. But after 1 year, petrol price is rupees 120. एक साल पहले जो पेट्रोल 1 लीटर आता था 100 रुपए में, वही चीज आज 120 रुपीज में आ रहा है.
So you invested 6,000 units into two before 1 year. Before 1 year. But if you want to buy this article today, current price, this is historical cost, 2 rupees. So to buy 6,000 units, you have to pay 120%. 120%. So 12,000 into 120%. 14,400. सो 2 रुपीज आज आप लेते हो तो 2 into 120%, 2.4. Same thing you are buying at 2.4, but you are not selling at rupees 3 plus 20%. You are selling it at 3 only. देखो सिंपल है. वी हैव वन रेस्टोरेंट, ऑल ऑफ माई पार्टनर्स. मेरी मॉम चलाती है, शी इज द डायरेक्टर ओवर देयर. तो बेटा बटर 1 year before is 500 rupees kg. Now it's 530. Dairy products prices are increased. But beta still our pav bhaji price is same before after 1 year. It's okay. हमें अभी भी प्रॉफिट थोड़ा कम हो रहा है, बट वी डोंट वांट टू इंक्रीज सेलिंग प्राइस. एक साल पहले भी वही प्राइस था, एक साल बाद में पाव भाजी का प्राइस वही है, बट मतलब सेलिंग प्राइस. बट बटर रॉ मटेरियल is on the higher side. Oh, so you are not selling it at rupees 3 plus 20%. You are selling it at 3 only. तो अभी इसका मतलब क्या होगा? Now presentation we are doing in the same way. Opening equity. Now see, opening equity at current purchasing power. So 6,000 units 1 year before you bought at 2 rupees. But if you buy it today, you have to pay 2.4. तो आप लोग 6,000 into 2 नहीं करोगे. 6,000 units capital maintenance at current purchasing power. Current purchasing power. Okay. हाँ. So 2 रुपए जो पहले लगता था, आज वही हम लोग 2.4 में लेके आएंगे. बट बेचेंगे कितने में? 3 रुपीज. सो मैक्सिमम ड्रॉइंग्स आप कितना कर सकते हो? सो यू अर्न 3,600. दिस इज योर मैक्सिमम ड्रॉइंग्स. पर आपने कितना विड्रॉ किया? 6,000. सो आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकाला. मतलब अभी आपको 14,400 रुपए आपके पास, आप 6,000 यूनिट्स नहीं ला पाओगे. यू कैनॉट बाय 6,000 यूनिट्स इफ यू विड्रॉ 6,000. If you withdraw 6,000, how much profit you have? Only 18,000. Sorry, how much cash you have? 18,000. And if you want to, again you want 6,000 units to buy. And if you withdraw 6,000, then beta there will be no cash. तो जो बिजनेस का कैपिटल है, कैपिटल that you cannot use again, आपको और पैसा लेके आना पड़ेगा. So how much you should withdraw if you want to buy only 6,000 units recycle? Okay, so you should withdraw only 3,600 maximum drawings, but you withdrawn 6,000, तो 2,400 आपने एक्स्ट्रा बाय किया, एक्स्ट्रा ड्रॉ किया. ओके, एक बार मैं वापस बताता हूं हिंदी में. बेटा 6,000 यूनिट्स आपने क्या किए? 6,000 यूनिट्स आपने 2 रुपए से ले लिए, मतलब 12,000. अभी 12,000 बेचा, 6,000 यूनिट्स तो 3. पर प्रॉब्लम क्या है? आपको 6,000 यूनिट्स वापस लेने हैं, क्योंकि बिजनेस तो आप साल भर करोगे ना. एक साल खत्म हुआ तो बिजनेस क्या बंद हो गया? चलो बंद हो, ऐसा नहीं होता है. तो 6,000 यूनिट्स आपको वापस लेने हैं. पर आज लेने गए तो कितना रुपए आएगा? 2.4. 2.4 रुपीज, क्योंकि 2 रुपए से वो तब था. अभी तो महंगाई बढ़ गई. महंगाई बढ़ गई तो आपको 14,400 लगेंगे. पैसा है क्या? 18,000 रुपया मिला था, 6,000 विड्रॉ कर दिया है, पैसा जेब में 12,000. तो मत विड्रॉ करना. 14,400 चाहिए तुझे वापस, 14,400 चाहिए, तो मैं कहां से पैसा लाऊंगा? तो तू बिजनेस में से विड्रॉ मत करियो. तू बिजनेस में से ये पैसा विड्रॉ मत करना. आया समझ में? दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. इफ यू यूज दिस फॉर्मेट यू वोंट गेट द रॉन्ग आंसर. दिस इज द बेस्ट फॉर्मेट आई हैव गिवन टू यू. से यस और नो? फॉर्मेट बेस्ट है कि नहीं बेटा? फॉर्मेट में पैसा डालो, अपने आप आंसर आएगा. ओके, अरे ओके का
चलो कमेंट सेक्शन में बोल दो. Any difficulty till now in example 7 and example 8, sorry, 8 and 9? Otherwise, we will move to one more example. Otherwise, we will move to. So this is called as current purchasing power. Finish, beta. Finish. Concept finish. So historical cost pe you will consider 2 rupees. Current purchase power pe you will consider 2.4. Patience are needed. बेटा 6000 यूनिट्स एकदम मस्त फॉर्मेट सर. हाँ जी सर, बेस्ट फॉर्मेट, थैंक यू सर. शिवंजनी जी, if I buy 6,000 units 1 year before, I have to invest 12,000. But if I record it at current price, current purchasing power, it will be 14,400. My selling price is not going to change. If I withdraw 6,000, then I cannot buy 6,000 units once again. Okay? Because I will need 14,400, and if 18,000 I sold, I'm getting 18,000 by selling the products. And if I withdraw 6,000, my capital will be 12,000, but I want 14,400. So I'm a shortage. I am having a shortage of 2,400. I'm having a shortage of 2,400 for current purchasing power. If I withdraw 6,000. So I should restrict my earnings, drawings 3,600. Yes. Better is given, na Padmavati ji. 6,000 units. Selling price is given in the question. Selling rupees, 3 rupees per unit is given. Why are you asking such dangerous question, beta? It's given, na? In the last question, in the previous example, 3 rupees per unit is sold. So 3 रुपया ये बेचना, क्लोजिंग इक्विटी. सेल करने से क्लोजिंग इक्विटी मिलेगा, बाय करने से ओपनिंग इक्विटी मिलेगा. Why are you asking these questions? If I buy it today, it is like index number. Very good, beta. I don't know why you are finding this difficult. चलो एक TYK का क्वेश्चन कर लो. Otherwise, do this question. चलो. A trader commences business on 1/1/2001 with a 12,000 capital. ₹2 per unit. During the year, he sold units, 6,000 units into 3. He withdrawn 6,000. But after 1 year, if price is 2.5, 2.5 means, yes. So कैसे निकालोगे? Opening equity 6,000 units into 2.5. 15,000. You can write over there. Closing equity 6,000 into 3. 18,000. So maximum drawing 3,000. But you withdrawn 6,000. So negative 3,000. Negative 3,000. You can check. Yes. So you should restrict your earnings to rupees 3,000. You should restrict your earnings through 3,000. Simple. Illustration number 2. Have I solved it? Haji. Illustration 2. This is the answer. Easy, che? One more question. हो गया. I will give you screenshots at the end. All these questions. Don't worry, beta. Very good, मेघना नेहा. नेहा ने एक बहुत बढ़िया कमेंट दिया है. And Neha, you are doing excellent work. Sir, I solved this concept. मैंने ट्राई किया था.
नेहाई सिंह, कुछ समझा नहीं लास्ट टाइम, अब आपके फॉर्मेट से समझ में आ गया सर, थैंक यू। अरे वाह बेटा, वेरी गुड। और ये आपने ट्राई करना चाहिए डेली बेसिस पे, बिफोर सेशन यू रीड स्टडी मटेरियल, दैट विल बी द परफेक्ट वन। ओके, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करो, चलो। एक ट्राई करो, चलो, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, चलो ये करो ट्राई। टेल बी द अमाउंट। हिस्टोरिकल कॉस्ट, एकदम सिंपल है। यस, ट्राई करो। मोहन स्टार्टेड बिजनेस 12 lakhs, 60,000 units into 20. Financial year ending 31st March 2002. He sold entire stock for 30. In order to maintain the capital intact, capital the max, calculate the maximum amount that he can withdraw. चलो 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 बोलो, by historical cost. Who is answering this question? चलो। हाँ बेटा, प्रद्युम्नन, प्रद्युम्नन। Yes, you can recall in the same way. एवरेज प्राइस इज बेटा वही 125 आज की प्राइस, ऑन एन एवरेज प्राइस। मैक्सिमम ड्राइंग्स, जगत एस आर आंसर्ड इट वेरी क्विकली। जगत एस आर, वेरी गुड, फ्रॉम साउथ इंडिया। बेटा एस आर स्टूडेंट्स, वेरी गुड बेटा, दे आंसर्ड वेरी फास्ट। अनमोल ने भी आंसर दिया है, बट आफ्टर जगत जी, 6 lakhs। यस, वेरी गुड बेटा। सो वी हैव फिनिश्ड। Yes, the answer is maximum permissible drawing 6 lakhs and permissible drawing is 6 lakhs. तो रिटर्न प्रॉफिट 0 होगा। सो परमिसिबल इज अ बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, 6 lakhs he can withdraw, 6 lakhs into 20, 60,000 into 20, 60,000 into 30, 6 lakhs he can withdraw, रिटर्न प्रॉफिट इज 0। और कुछ शक, सवाल, क्वेश्चंस? ओके, राहुल शर्मा जी, बोर्ड ऑफ स्टडीज में बेटा बहुत क्वेरीज आती है, तो आपको कभी भी क्वेरी होगी तो आप मुझे यहाँ पे पूछो। इफ आई थिंक दिस क्वेरी इज बेटा, मतलब रीजनेबल क्वेरी है, आई शुड आंसर इट, देन आई विल गिव यू आंसर। अदरवाइज बेटा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑल ओवर इंडिया के कितने वो लोग भी क्वेरी सॉल्व करेंगे। जेन्युइन क्वेरी होगा तो हम लोग सॉल्व करेंगे। 4 मार्क का क्वेश्चन है, 4 मार्क। हाथ के कि नहीं बेटा? यस, व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड इट? नाउ सी द थ्योरी। कैपिटल मेंटेनेंस एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, opening and closing assets are stated at historical cost. Current purchasing power, restatement of closing prices using average price indices, average price, और इधर स्पेसिफिक प्राइस। सो एवरेज लिया तो करंट परचेसिंग पावर, एंड स्पेसिफिक लिया तो, yes, specific price is physical maintenance. If specific price is given in the question like 2.4, 2.5, average price दिया होगा तो current purchasing power, okay, and specific price दिया होगा तो physical capital maintenance. See, the difference is, there is no difference. सिर्फ current and physical same answer, only the difference is one is using average price, one is using specific price. Yes. गुंजन जी बोल रही है, सर आप बाकी फैकल्टीज को भी बोल दो, हिंदी में समझाओ। बेटा एक बार मैंने बताया हुआ है ये चीज, बट नाउ इट्स डिसीजन ऑफ एवरी फैकल्टी, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मैं तो प्रेजेंटेशन सिंप्लीफाई कर देता हूँ बाय यूजिंग पीपीटी। तो माइट बी इफ दे आर गिविंग इन राइटिंग तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। आई डोंट नो अदर फैकल्टीज आर यूजिंग सेम प्रेजेंटेशन और डिफरेंट प्रेजेंटेशंस। ठीक है।
चलो, सो अभी मेरे पास ये भी हो गया। हाँ, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट बचा है अभी थ्योरी का। यस, सो वी विल फिनिश विद दिस चैप्टर नाउ। यस, एंड नेक्स्ट चैप्टर विल बी वेरी इजी, 30 minutes का चैप्टर। बेटा नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, नाउ वी हैव टू डू सम थ्योरी पार्ट। प्लीज डोंट गिव अप। ओके, आई नो थ्योरी पार्ट है, but don't give up. Okay, so one question is there. I have covered all these questions, beta, your entire study material. Afrin, very good. Qualitative characteristics. So beta, your financial statements. What are financial statement? Balance sheet, P&L, cash flow statement. Yes, recall it. Then you have statement of changes in equity, and last one is notes to accounts. Yes, understandability. Then you have relevance. Then we have understandability, relevance, reliability, then comparability. So what is, there are 4 qualitative characteristics. Remember, URRC. Okay, ठीक है, RRC or understandability. Understandability means your financial statement, it must be understandable with the reasonable users with the reasonable knowledge of business. Relevance is, it is not right to think more information is always better. मेरा 2 टाइप के लोग हैं। एक एग्जाम्पल मैं हमेशा ना बहुत ज्यादा बताता हूं दक्ष को, तो अपनी इज्जत इच नहीं है। ओके, ही नेवर थिंक कि पापा इज ग्रेट, ऑलवेज ही थिंक्स कि मॉम इज ग्रेट। व्हाई? बिकॉज मॉम इज नॉट गिविंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, शी इज गिविंग एग्जाम्पल्स टू द पॉइंट, शी नेवर टॉक्स मोर। बहुत शांत औरत है, तो बेटा ओनली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन वो देती है। पापा क्या करते हैं दक्ष के, बहुत इंफॉर्मेशन देते, बेटा ये कर वो कर, ऐसा अच्छा होता है, दुनिया भर की बातें करेगा। तो पापा उसको क्या है, पापा लगता है यार बहुत दिन भर पिटता रहता है हमें, यस दिन भर मुझे डांटेगा, और वही मॉम ने एक बार भी डांटा तो बेटा पढ़ाई के लिए लग गया। सो दिस इज द थिंग, it is not right to think that more information is always better. A mass of irrelevant information creates confusion and can be even more harmful. See, beta, if I give you full study material in this format, you won't enjoy. You want only that point which is relevant for exam. So you want 100 pages ka book. Study material is useful, I know, but you want shortcuts. You want, sir, by heart points. Please give us by heart points, which is important. So this is the no more information, only and only important information, relevant hone chahiye. Yes, constraints, there must be timeliness and benefit bhi hona chahiye. Okay, reliability. Now reliability means what? You should be reliable. Your financial statements are not biased. Bias means what? Ki it is not in the favor of business. Okay, means board of directors decisions, it is biased. If they are wrong, if they are not properly given any treatment, you should record it. Okay, you should give your opinion in your annual report, in auditor's opinion. Okay, so it should be error free and bias, error free from bias, मतलब किसी की साइड नहीं लेनी है। ओके, सो इन्वेस्टर की भी साइड नहीं एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी साइड नहीं, ये याद रखो। नेक्स्ट वन, transaction and events reported are faithfully represented. Means they are faithfully means you can have trust on your financial statements. आपके financial statements पे आपको trust होना चाहिए. And transaction in events are reported on the principle of substance over form. Now what is this? Yes, I'm going to tell it in the accounting standard 19. Okay, neutrality. Yes.
Okay. Transactions and events are free from bias. The information in financial statement must be complete and prudence is exercised. अभी prudence क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा S1 में. Comparability होनी चाहिए. You can compare your financials interfirm. Interfirm means last year and current year. It's interfirm. And intrafirm means Reliance and Tata. Intrafirm. Reliance and Tata का comparison financial statement is called as intrafirm. And interfirm means last year and current year. Okay. So these are 4 important things. Your financial statement must be true and fair. Means 100% correctness is not required. True and fair होने चाहिए. 100 कभी कभी गलती होगी. इंसान है. So human errors are always there. But it must be true and fair. Okay, 100% correctness. No one gives assurance कि संकेत सर भी 100% correct ही भारी सिखाएगा. ऐसा जरूरत नहीं है. I will teach you true and fair. Okay. But elements of financial statements you already covered: asset, liability, equity, income, and expenses. So I won't give it detail. You can read it from my notes. So I don't think you uski जरूरत है. So asset means benefit, liability, equity, income, expenses. Measurement we have done. That 4 bases: historical and capital maintenance we have done. So this is all for this topic. Test your knowledge. Chalo. The going concern concepts assumes that business can continue in operation existence for foreseeable future. Don't answer it because I want to finish this chapter. The business cannot continue its operation existence for foreseeable future. The business is continuing in the profitable. So answer is A. 2 principles, qualitative characteristics. This is relevance and reliable. ये ज़्यादा important है. 2 qualitative characteristics, relevance and reliable. All of the following are components of financial statement except human resource responsibility report. Balance sheet होगा, P&L होगा. Accounting policy can be changed by statute for better presentation or both. Both. Value of equity may be changed due to contribution from or distribution of equity participants. Yes. Income earned or expenses incurred. So both. Answer is both. Contribution भी और income expenses भी हम लोग income plus करते हैं and expenses minus करते हैं. An item meet the definition of elements of financial statement should be recognized in the financial statement if it is probable that any future economic benefit will flow to the enterprise. It is an asset. Item has cost or value that can be measured reliably. Both A and B. So answer is both. A machine was acquired in exchange for old machine 20,000. Historical cost. The carrying amount of old machine is 2 lakhs, whereas the fair value is 1 crore 50 lakhs, 1,50,000 on the exchange. The historical cost, what you paid. Acha, sorry. Yes, better. This IMP question, sorry. A machine was exchanged with the old machine and 20,000 कैश में दिया और 1,50,000 की फेयर वैल्यू है. सो बेटा S10 में मैं पढ़ाऊंगा आपको. डोंट वरी, S10 में वी आर गोइंग टू सी दिस कॉन्सेप्ट. Which of the assumption is not considered as fundamental assumption? Going concern, accrual, and reliability. But obvious reliability. S1, we are going to study S1 within on Monday itself. Okay, yeah, tomorrow only. Yes, कल ही हमारा S1 हो जाएगा. Liabilities are recorded at undiscounted amount of cash, undiscounted, to be settled on settlement of liability in the normal course of business. But obvious, it is realizable value because you are going to settle it today. Settlement means realizable. Thank you. For chapter number 2. Should I start with chapter number 3? Yes, you only tell me बेटा. Start कर देते ना 15 मिनट में, बहुत सारा हो जाएगा. I know. अच्छा, स्क्रीनशॉट्स लेने हैं.
हाँ जी बेटा, एक बार स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए बेटा। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि ये सब बराबर है क्या नहीं है, बट हाँ, एंड रिमेनिंग क्वेश्चन यू कैन ट्राई बाय योर ओन। विल स्टार्ट। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट फटाफट। इलस्ट्रेशन 2। यस। करंट परचेसिंग पावर। I'm not going to upload these notes. I will count 5. Example 1। 100 पेजेस की बुक नहीं, ये 400 पेजेस के बुक में है बेटा। This you have to cover it in 400 pages book. This is accrual versus cash. It's very simple problem. Example 1. Example 2 you can do by your own. It's very simple. Example 4. Please finish it in your 100 pages book. Historical cost and that I have not taken here. Yes, 9 number. PYK. 9 and 10 beta we have just done at the beginning, so you can finish it over there. दस का आंसर मैंने प्रेजेंट किया था। कैश इज अ बैलेंसिंग फिगर। इंडेक्स इन 400 पेजेस बुक। इंडेक्स भी ले लो बेटा। इंडेक्स को कंप्लीट करो। टुडे लॉट ऑफ होमवर्क बेटा। 400 पेजेस के बुक में है ये सब। TYK 9 is similar to, एक सेकंड ना, similar to example 3 4, example 3 and 4। TYK 10 is similar to ILU 1। ILU 1। हाँ जी। Now you can finish it. Take a screenshot। हाँ जी। Now 100 pages book। Yes। Theory, I think up to, yes, qualitative characteristics you can write by one,
टेक अ स्क्रीनशॉट. 100 पेजेस बुक है ये. 100 पेजेस बुक. ओके. एसेट्स. प्लीज राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स. लाइबिलिटीज. अच्छा, आई विल लीव यू आफ्टर दिस. ठीक है, कल टुमारो विल स्टार्ट विथ एस चैप्टर 3 एंड S1. डोंट वरी, आज बहुत होमवर्क है. आई नो इट विल टेक 1.5 hour टू राइट ऑल दीज थिंग्स. इक्विटी. ये लास्ट का 5-10 मिनट का देख लीजिए बेटा. एक्सपेंसेस. मेजरमेंट. कॉन्सेप्ट 8. मेजरमेंट. करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू. 100 पेजेस के बुक में कैपिटल मेंटेनेंस एंड इम्पेयरमेंट लॉस. हाँ, ये जरूरी है. इफ कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन. ठीक है. क्या है, अभी न्यू कॉन्सेप्ट दिमाग में डालना विल बी वेरी डिफिकल्ट. सो आई वोंट स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर. बट माय लवली स्टूडेंट्स, आई नो you are going to write it in 100 pages book. Yes, every one of you. बेटा ब्रांच में डेली 1.5 hour का क्लास होता है. ओके, सो ब्रांच का नंबर मैं आपको कल दूंगा बेटा. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, 100 पेजेस के बुक को भी अच्छे से मेंटेन करो प्लीज. आफ्टर सेशन यू कैन सी तमन्ना नोटबुक. तमन्ना इज माय स्टूडेंट बेटा. यू कैन सी हर नोटबुक. बेटा क्या लिखती है ये, बस ऐसे लगता है बस देखते रहिए नोटबुक को. देखो, पूरा लिखा हुआ है, पूरा पूरा लिखा हुआ है. रेड पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, सब. मैं आपको तमन्ना की बुक ही भेज दूं क्या? क्या मेंटेन करती है यार. नजर ना लगे बेटा इसको. देखना क्या लिखा है. 100 पेजेस की बुक, प्रॉपर मेंटेनिंग, प्रॉपर. सिर्फ इतना ही होता है कि मैं उनका आवाज सुन पाता हूँ, आप लोगों का आवाज नहीं, आपके कमेंट्स सुन पाता हूँ. बस डिफरेंस इज दैट. एंड डेली टारगेट्स आर लेस एज कंपेयर टू इधर केस में. ओके, डोंट वरी. So here we have finished with the chapter number 2. Actually बहुत बड़ा चैप्टर था. नेक्स्ट टाइम आई विल टेक परमिशन ऑफ इंस्टीट्यूट के 2 days. तो जहां पे भी डेविएशन हुआ है मैं वो बता दूंगा इंस्टीट्यूट को. तो नेक्स्ट सेशन, यस आई वॉज वेरी स्लो, मैं बहुत अच्छे से लिया है. प्लीज प्लीज प्लीज, फीडबैक फॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप मेरे फीडबैक्स देते रहो, बिकॉज इफ यू वांट ऑल टॉपिक्स या कुछ भी होगा, योर फीडबैक्स आर जेन्युइन रिक्वेस्ट कि आप लोग अच्छे से उसको करो. योर कमेंट्स एंड लाइक बटन आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट. इंस्टीट्यूट के लेक्चर को मैक्सिमम लेवल पे शेयर करो. बोर्ड ऑफ स्टडीज इज गिविंग यू दिस सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट, बट यू रिमेंबर दे आर गिविंग यू बेस्ट थिंग्स जितना भी हो सकता है. ऑल बेस्ट थिंग्स एट वन प्लेस. सो वी विल मीट टुमारो. थैंक यू. यस, बंद कर दीजिए.